Welcome to Shruti Outloud, a podcast where I invite guests from different walks of life to share their stories of following their passion, success, and happiness, which in turn motivates our listeners to follow their heart. Hello, and welcome back to Shruti Outloud Podcast. Today's episode is again another collaboration with Queen's Lounge, and today we have another expert who will basically be walking us down the lane of cosmic energy. And when I say cosmic energy, what I mean is we'll be talking about astrology, we'll be talking about Prashna Kundli, we'll be talking about numerology, Vastu Shastra, and a lot more. So let's welcome our guest, Acharya Saanvi Gupta, and let's take this conversation ahead. Namaste. Namaste. Thank you so much, Shruti, for giving me this opportunity. I'm Acharya Thank you Saanvi so Gupta. much. Yeah. Right. Thank you so much for agreeing to be a part of this and sharing your knowledge for our audience, with our audience, and basically leaving them with something new, a new learning, a new motivation. And that's the whole concept of this podcast. Basically, yeah, let's talk about life. Right. So let's start off with the very first question that we have for you. So you were on your path of pursuing your career in actuarial sciences, and then you turned 360 and entered the world of astrology. Can you tell us the story behind it and what really motivated you to go ahead with the world of astrology? Okay. Shruti, I'm born and brought up in Delhi. I did my schooling from Martyr Convent and I did then graduation BCom from Venkateshwara College, Delhi University. Then I pursued actuarial sciences and cleared 9 papers from Institute of Actuaries of India and UK as well. Then I had plans to go to abroad to University of Kent to pursue masters. And everything was done like papers, formalities, accommodation, admissions, everything was finalized. But I don't know how and why I backed out. My father, he was a little bit in a depressed state at that time, so I wanted to support him, so I backed out and then started looking for a job in the same field. And I was trying my best but couldn't get a call from any of the company. Finally, I remember I got a call from the company Ifco Tokyo General Insurance in Gurgaon, and I appeared for an interview. But again, there was no call from the company. I really got disheartened, why, in spite of so much of hard work, why I'm not able to bear the fruits. And family से भी बहुत pressure था that you're already 24, 25. You know the Indian culture कि when you touch 24, तो आपको एक pressure आ जाता है कि you should get married, especially in my time. So I also gave up कि I'm not able to get the result. तो अब आपको जहाँ करना है शादी, I'm okay with it. So finally, I got engaged in the month of March. And I exactly remember after the 2 weeks of my engagement, I got a call from IFCO Tokyo General Insurance that I was selected. But it was too late then. So Destiny had some other plans and I got married. So my husband always, encouraged me that you are so intelligent, you are so educated. Do something for yourself. Why do you want to sit at home? And then I had my babies, तो छोटे छोटे बच्चे थे. So I, told him about my interest in this astrology as a science. So he agreed to it. कि नहीं जहाँ whatever you want to do, you are free to do that. So I went to my mother-in-law. I also, seeked her support because बच्चे बहुत छोटे थे. They were, my daughter, she was in months. So she also agreed Right. कि नहीं, I'll support you my best. So this is how I started, with astrology. And the main reason why I started with astrology was I wanted to know the reason why I couldn't pursue my career in natural sciences. Why, in spite of so much of hard work, I'm not there as an actuary. So this was a reason my journey from actuarial science to astrology. And then finally I learned astrology and I knew the reason now. Ki what was the reason behind it?
Wow, that's quite wonderful. And the way you mentioned that your mother-in-law also supported you, I think that's really nice because many a times a lot of people they are not able to pursue what they really want to do because of either lack of support or one situation or the other. And I also absolutely love the part that the reason you pursued this was because you wanted to find answers for your own self, and that really motivated you to just go ahead with it. Yeah, I'm seriously blessed to have, such a beautiful in-laws and husband. And they've always supported me and they're supporting me now also. Right. So, if I may ask, how old are your kids now? Okay. So my son is 9 years and my daughter is 6.5 years. Oh, wow, that's wonderful. That's quite Yeah, wonderful. So, you have been doing this, balancing your work, balancing your passion, and your home. right. Great. Okay, so next I am going to quote something that you said, and yeah, take it ahead from there. So, for me as a professional, astrology is a pure form of science dealing with proper facts and logic. Have you ever faced such situations where the knowledge of astrology was questioned and possibly doubted? And how did you respond to such doubts? And how do you still respond to such doubts? Okay. So this is a very common question. Many times people come to me कि we don't believe in astrology, हम तो कर्मास में बिलीव करते हैं. एंड श्रुति अगर आपको याद है हम बचपन से एक स्टोरी सुनते आ रहे हैं कि अ मैन ही वाज पानी में डूब रहा था नदी में एंड वेटिंग फॉर गॉड कि भगवान आके मुझे बचाएंगे. उसके पास एक बोट आई बट ही रिफ्यूज कि नहीं मुझे तो भगवान आकर बचाएंगे. फिर एक उसके पास एक स्टिक आई जिसको पकड़ के ही कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ. अगेन ही रिफ्यूज कि मुझे भगवान आकर बचाएंगे. बट फाइनली ही ड्राउंड एंड डाइड. ही वेंट टू गॉड एंड आस्क्ड कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया. तो भगवान ने कहा मैंने नाव भेजी तुमने नहीं पकड़ी. मैंने तुम्हें स्टिक भेजा तुमने नहीं उसको लेकर अपने आप को बचाया. तो कर्म तो आपको ही करने पड़ेंगे ना. तो सेम इज माई बिलीफ कि कर्मास आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और एस्ट्रोलॉजी को आप एज अ साइंस एज अ गाइडिंग साइंस की तरह समझो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू पाथ्स इन फ्रंट ऑफ यू विच पाथ वुड बी बेटर फॉर यू कैन बी आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इसकी गाइडेंस आप ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल if your child is in 10th standard and he's confused whether he should go up for commerce or science. तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही कैन सी गाइडेंस कि विच स्ट्रीम वुड बी बेटर फॉर हिम, जिसमें उसका करियर बेटर वो अपने वे में बिल्डअप कर सकता है. सो टेक इट एज अ गाइडिंग साइंस, इसको आप अंधविश्वास मत समझिए. सेकेंडली एक मैं आपको बहुत कॉमन एग्जाम्पल इसका शेयर करना चाहूंगी. वी ऑल हैव लर्नड अबाउट 9 planets इन अ साइंस क्लासेस कि 9 ग्रह हैं उसमें द हेवीएस्ट प्लैनेट इज जुपिटर. जो जुपिटर है इट इज द मोस्ट हेवीएस्ट एंड डेंस प्लैनेट. तो इसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस हम एस्ट्रोलॉजी में कैसे लेते हैं. दोज पीपल हु आर मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय जुपिटर प्लैनेट उनके लिए वेट लॉस करना इज अ बिग चैलेंज. आप हमेशा देखेंगे उनको, हमेशा वो कहेंगे हमें तो हवा भी लगती है. ऐसा क्यों है उनके साथ? बिकॉज जो प्लैनेट का नेचर है वो उनको मिल रहा है. सेम विद सैटर्न. सैटर्न को जब हम साइंस में कलर करा करते थे इट वाज अ ब्लैक प्लैनेट. तो इसी तरह से दोज पीपल हु आर मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय सैटर्न दे आर लिटिल डस्की. कितनी भी वो फेयरनेस क्रीम लगा ले कुछ भी कर ले बट उनका कॉम्प्लेक्शन हमेशा थोड़ा आपको डस्की फॉर्म में मिलेगा. तो इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी इज अ ब्यूटिफुल साइंस और इस तरह से हम चीजों को कनेक्ट करते हैं. एंड वी सी अ साइंटिफिक साइड. हम इसमें अंधविश्वास लोगों को डराना आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट. एंड एक और चीज है जो बहुत कॉमन है एस्ट्रोलॉजी में, पीपल आर वेरी फेयरफुल अबाउट साढ़े साथी ढैया. बट आई ऑलवेज से कि आप अपने कर्म अच्छे करिए, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको खुश रखिए. बिकॉज साढ़े साथी क्या है, शनि से इन्फ्लुएंस्ड है. तो शनि कब खुश होते हैं, जब आप अपने एम्प्लॉयज को खुश रखते हैं. तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप अच्छी लाइफ में ऑनेस्ट अप्रोच कर रहे हैं तो नो नीड टू गेट स्कैर्ड. अच्छे से आप अपने कर्म करिए, यू विल गेट द रिजल्ट्स. I absolutely loved how you have given two references of Saturn because Saturn is my ruling planet. So I can easily relate to it and I have learned already from you कि जैसे आपने अभी बोला कि हाँ शनि आपका जैसे अगर आप अपने एम्प्लॉयज को खुश रखेंगे तो या थिंग्स विल बी गुड फॉर यू सो आई कीप दैट इन माइंड फॉर श्योर. So thank you for sharing that part.
And also, I absolutely loved how you are explaining things with examples. तो example से क्या होता है कि लोग actually relate कर पाते हैं. So again, I would like to show my gratitude to you for sharing these examples for better understanding of our audience. थैंक यू सो मच। देखिए श्रुति, आप एक चीज़ से तभी कनेक्ट हो पाते हैं व्हेन यू नो द रीज़न बिहाइंड इट। अगर मैं आपको सिर्फ इफेक्ट्स बताऊं विदाउट नोइंग द कॉज, यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट। तो आई ऑलवेज बिलीव वेदर इट इज एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, यू शुड नो द रीज़न बिहाइंड इट। तभी आप बहुत अच्छे से उसकी रेमेडीज एक्सरसाइज कर पाएंगे और दिल से करेंगे वो चीज़। Absolutely, absolutely. So that brings me to my next question and basically my curiosity about the same. So, could you tell our audience a bit about Vastu Shastra? Okay, so Vastu is basically ancient form of architecture. So हमारे जो वैदिक आर्किटेक्ट्स थे, they were very well versed about these laws of nature, and accordingly they used to construct building. आप सबको पता है यूनिवर्स जो है 5 एलिमेंट से बना है: एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। सो वास्तु इज बेसिकली करेक्ट प्लेसमेंट एंड बैलेंसिंग ऑफ ऑल दीज 5 एलिमेंट्स। आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि नॉर्थ हमारी डायरेक्शन है पानी की और साउथ डायरेक्शन है हमारी फायर की। अगर हम फायर की डायरेक्शन में, मतलब साउथ की डायरेक्शन में, कुछ पानी का फीचर ऐड कर दे, जैसे कि हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक प्लेस कर दे, बोरिंग कर दे, या फिर ब्लू कलर ले आए, तो क्या होगा? पानी और आग एक दूसरे के दुश्मन है, और पानी ऑलवेज ट्राइज टू एक्सटिंग्विश फायर। तो क्या होगा? वो पानी जो है आग के फीचर को, फायर के फीचर्स को कम करने की कोशिश करेगा। और फायर के क्या फीचर्स हैं? एक्सील, स्ट्रॉन्ग विल पावर, कॉन्फिडेंस एंड रिकग्निशन, फेम इन योर करियर। तो ये सब चीजें आपके रिड्यूस हो जाएंगी। तो वास्तु इज बेसिकली करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को उनकी सही जगह बिठा देना और किसी भी एक्सेस एलिमेंट को होने से कम करना। जैसे कि आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा क्या कहता है कि वात, पित्त, कफ 3 चीजें हैं। जब भी इम्बैलेंस होता है तो आपकी बॉडी में डिजीज क्रिएट होते हैं। तो इसी तरह से वास्तुशास्त्र है, आप 5 एलिमेंट्स को उनकी सही जगह पे बिठाइए एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस। Absolutely. So here I have another question related to Vastu. Um, so is it only about the architectural placements या फिर ये किसी और तरह से भी आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर इट्स मोर अबाउट हाउ यू आर प्लेसिंग थिंग्स अराउंड योर हाउस? ओके। देखिए जो बेसिक वास्तु है, इट इज़ अबाउट आर्किटेक्चर। बट आज के ज़माने में, मॉडर्न लिविंग में, जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर रिसाइडिंग इन सोसाइटीज़, फ्लैट में 100% वास्तु कंप्लाइंट अपना कंस्ट्रक्ट करना, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इन दैट केस व्हाट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इज़ कि आपके जो फ्लैट के जो मेजर डिफेक्ट्स हैं उसको हम क्रिएट होने से बचाएं थ्रू इंटीरियर वर्क। बिकॉज मेनी थिंग जैसे स्लोप्स है, कलर्स हैं, एंड पेंटिंग, स्क्रिप्चर्स, एवरीथिंग दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वास्तु। तो ये सब चीजें भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टू क्रिएट पॉजिटिव एनर्जीज इन योर हाउस। सो दिस इज मॉडर्न वास्तु, दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न वास्तु। Thank you for answering that question. So my next question is something that I saw on your website और मुझे काफ़ी curiosity थी क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है and this is the very first time that I've heard about it. So could you tell us what is Prashna Kundli? Okay, so Prussian Kundali is a very accurate form of Kundali. आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा, और जिस टाइम पे आपने मुझसे प्रश्न पूछा, आई विल मेक अ कुंडली। सपोज टुडे इज मार्च एंड डेट इज 2 मार्च, टाइम अभी है 2:30 फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा तो मैं अभी इस टाइम की कुंडली बनाऊंगी एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि आई एम नॉट एबल टू फाइंड माई आर्टिकल, मेरी गोल्ड की चेन मिसिंग है, तो कैन यू हेल्प मी कि कहाँ मेरी चेन मिल सकती है मुझे। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रश्न कुंडली आई विल टेल यू कि वेदर आपको आपकी चेन मिलेगी या नहीं, अगर मिलेगी तो कहाँ मिलने के चांसेस हैं, एंड कौन सी डायरेक्शन में मिल सकती है, कब तक मिलने के चांसेस हैं, एंड किसके पास मिलने के चांसेस हैं। आपके फैमिली मेंबर में मे बी आपने किसी के पास रखवाई और भूल गए हो। So all these questions can be answered through Prashna Kundli. जैसे कि whether I'm going to win the court case or not, and whether I'll get promotion or not. So these questions can be answered very accurately with the help of Prashna Kundli.
Thank you. And first of all, I would like to tell it to my audience that it was my fault that I said it a little incorrectly. So it's not Prashna Kundli, it's Prashan Kundli. And Prashan means a question. So thank you. And yes, this is very interesting. ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, but this is very, very interesting. तो इसके बारे में क्योंकि मैंने जैसे मैं एक इफ कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ कॉमन डे टू डे पर्सन तो मैंने इसके बारे में जैसे नहीं सुना था कि ये प्रश्न कुंडली भी होता है तो इसकी ऑडियंस है या फिर लोगों को इसके बारे में पता है क्योंकि आई वुड रियली लव फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन सो पीपल कैन गेट टू नो अबाउट इट ओके, सो श्रुति, दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू। आपने देखा होगा, जैसे आपने हमारी हिंदी की बॉलीवुड मूवीज में कि आप क्वेश्चन के लिए जा रहे हो, तोता एक कार्ड आपके लिए उठा के लेकर आ रहा है। तो दिस इज समवॉट वेरी सिमिलर टू दैट। और ये जो चीज है प्रश्न कुंडली, ये भी हमारे शास्त्रों से आई है। और आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो डेफिनेटली दे हैव अ नॉलेज अबाउट इट कि हाँ, ऐसा कुछ होता है। एंड मूवीज में भी आपने देखा होगा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया अबाउट पैरेट पिकिंग अप अ कार्ड और इस तरह से कुछ बताना। एब्सोल्युटली दैट्स वेरी ट्रू हाँ वो देखा था बट हाँ उसका पॉसिबली टर्म नहीं पता था सो गुड टू नो कि हाँ ये इतने टाइम से चला आ रहा है मे बी जस्ट द टर्म वाज मिसिंग बट थैंक यू फॉर फिलिंग दैट गैप so getting to the next question why should people get in touch with you and because from our conversation that we have had up till now I am quite convinced and I I'm quite actually quite curious about your work but yes, I would still like for you to answer that question that why should people get in touch with you? And could you share a list of things that you do so our audience know exactly what they can work on with you? Okay, great. So I keep a very scientific approach in all these sciences. Being a student of actuarial sciences, I cannot promote superstition, किसी को डराना, सब कुछ करना. So I believe कि अगर हम scientific way में लोगों को ये चीज समझाएं कि किस तरह से वो अपनी life में, from being negative to positive, taking help of all these sciences, it can really help. Or actually, it happens to my clients. So first of all, I keep a scientific approach, and my remedies, they are very very cost efficient in Vastu. I don't sell remedies कि मेरे पास ये चीज है, आप ये ले लो, आपको अच्छा मिलेगा इसका रिजल्ट। आई नेवर डू दैट। माई रेमेडीज आर इजिली अवेलेबल ऑन ऑनलाइन। आप जाइए यहाँ पे आराम से ऑर्डर करिए। एंड आई कैन सजेस्ट रेमेडीज विदाउट डिमोलिशन। वास्तु में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना तोड़ फोड़ के आपको बताना कि किस तरह से आप बैलेंस आउट कर सकते हैं चीजों को। सो दीज आर माई स्पेशलाइजेशंस इन वास्तु। Right. And are there any other services like numerology? So could you maybe share that list also? So थोड़ा सा audience जो हमारे listeners हैं, उनको एक बारी idea हो जाए and then they can easily hop onto your website and yeah, take it ahead Great. from there. Okay. So I'm a certified astrologer and a Vastu consultant, then numerologist, tarot card reader, crystal healer, and Prussian Kundali expert. All right. Thank you so much, आचार्य सानवी जी। और बस लास्ट में आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि what is the best way for people to get in touch with you or possibly book an appointment with you to discuss all of these things with you? Okay. So I'm present on Instagram, Twitter, LinkedIn, and Facebook as Astro Saanvi Gupta. I have a website by the name of www.thesanvigupta.com. All right. Thank you so much, One more Sanvi thing I ji. would like to add, I have an office in Noida, Sector 63. So, yes, if anybody is looking for offline meeting, they can come to my office in Noida. अमेजिंग अमेजिंग आपने ये ऑप्शन भी दिया क्योंकि कई बार होता है कि पीपल आर नॉट दैट कंफर्टेबल और वो चाहते हैं कि एक बार एक फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाए सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट एंड लास्टली yes I would like to thank you once again for being a part of this for sharing your knowledge for sharing all this information and yes giving a path giving a way for people to find what is right and also mentioning the point that it is all scientific and with facts, with logic, and without any superstitions. So, thank you once again.
Thank you so much, Shruti, and thank you, Queen's Lounge, Akanshi, for giving me this opportunity. And it was a great interacting with you. Thank you so much. Thank you. That means a lot to me. And hopefully, possibly, we'll bring you back for another episode on something very specific. And I'm looking forward to having that session with you. Sure. Thank you. Shruti Out Loud welcomes all stories. It can be a brand, it can be an organization, or it can be a person. The only thing common would be passion for life. Please subscribe to this podcast on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Ghana Podcast, and every other platform where you can hear this. Please leave a review as that helps my podcast to grow. Thank you once again. See you for the next episode. Bye.